Try to understand the grief of giving up. You know, when you are breaking from a relationship, what happens? 4 stages होते हैं इसके. पहला क्या होता है? Shock. This is not happening. ये कैसे हो गया मेरे साथ? So the second is denial. This cannot be happening. And then stage of anger. How can this happen to me? अल्लाह ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अपने पर गुस्सा, मुझे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी. And people keep moving in these 3 cycles. Those people who do not resolve, they end up going back to the same person, or they have new relationships because they are at a very vulnerable stage. You need to resolve. You need to keep telling yourself, I can go through it. I have to make it happen for myself, for my dunya and for my akhirah. If somebody is breaking up, never tell that person na roing. Let that person cry. मेरा उसके बारे में बात करने को दिल चाह रहा है, कर लो. सारी stages से गुजरने दें. You have to understand the turmoil which is going on inside her. Listen to her and then help her resolve. Show her the goodness in it. Tell her how brave she is. Tell her what benefits it will bring her in this life. Tell her how Allah is going to help her. She just needs to give little more time. Just push her a little bit more. और उससे communication कभी ना तोड़ें. So how do we handle the love in air? There are going to be 2 categories. There are going to be some people who are going to be involved in relationship and some who are not. Let's look at the dilemmas of those who are involved. We have 2 categories of people who are involved. We have ones who are legally involved. You are engaged and you are not setting limits. And the girl is in a fix कि मैं अब क्या करूं. So if you are legally involved, remember he is still a non-mahram. तो पहले से set limits. नंबर नहीं देना, अम्मी को भी बता देना मैंने बात नहीं करनी. If he is worth it, he would understand. और अगर आपने मिलना है या फोन आता है within the family circle, सबके सामने आप बात करेंगी. अगर वो बहुत इंसिस्ट करता है कोई कि मैं मेल करना चाहता हूं तो CC to your mom, dad, brother, anyone. उसके बगैर आप मेल रिसीव नहीं करेंगी. अपने आप को पहले से स्ट्रॉन्ग कर लें इस चीज पे. You will have to learn to handle demands like that. प्रेशर में ना आया करें. अगर वो इतना ही अच्छा लड़का है, समझदार है, he would understand. Okay, those who are illegally involved, they are living with false expectation. They are living in a world of uncertainty. They are making their parents unhappy. They will always have feeling of sin. बोझ रहता है दिल पे. उनको help करें to come out of this thing. Those who are not involved, they are at equal risk. हम कई दफा कहते नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी नहीं हूं, मैं नहीं अफेयर्स के पास जाती, मैं नहीं ऐसे काम करती. अब क्या है, जिसने पहले से ये सोच लिया कि मैं ऐसी नहीं हूं, तो all your guards are low. आप जिससे भी मिल रहे हैं ना, आप सोचे मैं ऐसी हुई नहीं, अब वो दिल में ठक चला गया, सबकॉन्शियस क्राइटेरियन को फिट कर गया. इसीलिए आप देखें हमारा दीन क्या बताता है, द मोमेंट अ मैन कम्स इन, यू आर ऑन गार्ड. यू ऑलवेज टेल योरसेल्फ ही इज अ नॉन महरम, बिकॉज वंस यू आर इन इट, इट्स लाइक अ क्विक सैंड. दलदल है, के लिए निकलना इज अ बिग स्ट्रगल. सो सेव योरसेल्फ. डोंट आइडियलाइज दोज पीपल. हर एक की जिंदगी में कोई मोहब्बत करने वाला है, मेरी जिंदगी में नहीं है. It is only by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that you are saved. Like Hazrat Yusuf alayhi salam said in this Surah Yusuf verse number 53, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. There's so many du'as which are there for us from masnoon du'as which work on our nafs. Make it a habit कि मैंने वो वाली दुआएं सब पढ़नी हैं कि अल्लाह ताला मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना. We also need to know the consequence of keeping those secret love. Wala muttakhidhi akhdan. Allah subhanahu wa ta'ala has very categorically told, don't keep secret friendships. Because we see there are emotional issues related to that, depression, breakups, mental and social pressure. You're not a productive person for even yourself. Face the reality. Aajkal, it's physical. It's all about getting physical. If you have those pregnancies, तो अगर अबॉर्शन किया तो क्या है पता है ना, इस्लामिक लॉ में क्या है, किलिंग अ सोल, और उस पर दियत है और कसास का लॉ है. ये कोई मजाक नहीं है. एंड देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट चाइल्ड. उस बच्चे का तो कसूर नहीं है, किसका कसूर है, द पेरेंट्स. बट डू दे नो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. लेकिन अल्लाह के पास क्या स्टेटस लिखा जा रहा है. हाउ कैन वी डू दैट. सो डिसीजन इज आवर्स. इस मामले में यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी रिजिड. डू नॉट लुक एट व्हाट द मीडिया टेल्स यू. Do not look at all those softer images कि बहुत अच्छी जिंदगी है उनकी. You have to control your desires inward. You have to control your desires in the environment. In the environment, what?
वला तक़रबुज़्ज़िना, करीब भी नहीं जाना उन जगहों के। बसंत मनाते हैं, नहीं मनानी। लेट पीपल कॉल यू बड़ी रिजिड है, रिजिड हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तुमने ये मतलब ये वाला ड्रामा तो देख लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? What do you mean? What do this show? All trash. And it's all going in your subconscious. So block all roads and make your connection with Quran strong. You have to create the culture. You have to change the taste of the people around and keep watch on your company. If you have friends around you who are into such relationships, उनको limit करें. Be very careful in that. कोई उसमें शर्मो हया की बात नहीं, झिझकने की बात नहीं, courtesy की बात नहीं. You have to safeguard your आखिरा. One important thing that you have to understand is the desires within us. जो कुरान में आता है ना कि इल्ला मा क़द सलफ, whatever has passed. अगर if you had been involved in any relationship, तो अब ये नहीं कि गिल्ट, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया ना, नहीं पता था, हो जाता है. इल्ला मा क़द सलफ, गुजर गया. अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं? इन्ना अल्लाह काना गफूर रहीमा, I will forgive. स्टेप तो लो. I know girls who are into relationships and they don't give up because उनको कोई ना कोई कहता है लो अब क्या फायदा, माफी नहीं होगी तुम्हारी, नेक नहीं हो सकती. नो, गिव अप इमीडिएटली. अल्लाह ताला माफ करने वाला है. फॉरगेट अबाउट पीपल. लोगों पे मत जाया करें. अर्ली मैरिज पे जाएं. देन रोजे रखें, चैनलाइज करें अपने आप को, प्रोडक्टिव कामों में अपना वक्त लगाएं. Now, how to handle the blackmailers? This is one important aspect I wanted to cover in this. Because होता क्या है? We have shared pictures, या शादी हो गई है तो आपको बाद में कोई कांटेक्ट करता है, मैं बता दूंगा, तो what are you supposed to be doing? उसे को जाओ बता दो, जिसको मर्जी बता दो, बताने दें. पहली बात तो बताएगा नहीं वो. They are usually cowards. Let's say you're not married, आपके पेरेंट्स को बता देता है, तो you can tell your parents. पहले नहीं जाके कहानी सुना देनी. उसे को ये पहले था, मैंने माफी मांग ली, तौबा, खत्म हो गया. देखें, your parents are going to obviously get angry. They have a right. They are upset. They might not trust you for a long time. They have a right. And be thankful for that. आपको वो नतीजा भुगतना पड़ेगा. It's just like somebody robs, steals, चोरी की, तौबा कर ले, माफी मांग ले, जेल तो काटनी पड़ेगी. You will have to go through those repercussions. But don't ever get blackmailed by anyone. If you're married, उसको क्या कर ले. If you're good relationship, you're sincere with your husband, even if he tells, वैसे तो बताएगा नहीं, but if he contacts your husband, you can always say, हाँ था. And if he says, why didn't you tell me earlier? Because you said it was finished. And he was trying to blackmail me. And that is why I told him, go and talk to him. And if you trust me, give me time. Even then, your husband might be suspicious of you for a long time. So let him be. If you are sincere, he will understand it with passage of time. और अगर कोई मुश्किल होती भी है तो कोई बात नहीं. Listening to that blackmailer is a more torture. और ये याद रखें, आपने माफी अल्लाह से मांगी है, अल्लाह ताला आपको देगा. So how do you satisfy your love need, humanity, people, and getting married? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah Ta'ala says, out of my signs is a sign that I have made spouses for you, so that you find tranquility among yourself. And وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Peaceful relationship. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. There are signs for those people who do what? Ponder. We're living in times when we have to make the impossible possible. And how? Build a strong relationship with Allah, with Prophet sallallahu alaihi wasallam, religious अपनी obligations, family, सिला रहमी नहीं हम करते. क्योंकि देखिए ना, love need तो है ना. It's not like living in a vacuum. When you're not fulfilling it the right way, तो wrong channels बहुत आएंगे. And I'll finish off with this beautiful saying by Rabia Basri, when she said, I'm in love with the beloved, whose love does not add any flaws to my personality. Let us love Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah protect us from all the fitnas in these times. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.